So let's come to basic few simple things. जैसे कि पहली चीज़ जो मेंशन की हुई थी कुछ tweets में, which was with regards to a tweet that I had made, 2 tweets, 3 tweets, पता नहीं 2 tweet थे शायद, which I have made in a while back and one was in around 10 years back. तो guys उसमें जो भी वो conversation हो रही, सबसे पहले मुझे let's say anyone coming out and calling me or you're anti-national or stuff like that, I don't care about that, because first of all I'll tell you what they did. There is like, you know, the tweets that are there, they are there. I don't go there and start deleting shit and stuff like that. Now there was one particular tweet which was mentioned that how like, you know, there was one particular fact that where I have mentioned कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, why aren't you basically asking the questions regarding those particular matters, right? Now देखो, I'll start with this. जिन चीज़ों के बारे में बेसिकली इंसान को पता नहीं होना, उन चीज़ों पे कमेंट करना नहीं चाहिए, ठीक है? मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि बिकॉज मैं जिस जगह से हूँ, आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पे इंसान की लाइफ कैसे थी. मैं 15 साल पहले वहाँ से निकल गया था ड्यू टू लॉट ऑफ इश्यूज़, जो लोग वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी. एंड अगर मैं कहीं पे कुछ गलत हुआ है या कुछ चीज़ें उस टाइम पे एड्रेस हुई हैं, इफ़ आई पर्टिकुलरली मेंशन दैट, why is it for me to be anti-national because of those particular reasons, right? Now let me pick up basically first tweet, which was the first one that was mentioned there, that mentioning the rapes, mentioning the missing people, mentioning a lot of things that were there, that were underage kids which died. तो मेरा उस बारे में क्वेश्चन था, और वो जो ये लोग बोल रहे हैं कि ओ लाइक यू नो यू ट्वीटेड दिस एंड दैट, देयर वाज अ थ्रेड. दैट कन्वर्सेशन वाज ऑन डीजीपी कश्मीर पेज एंड इट वाज बेसिकली आई थिंक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कश्मीर फाइल्स. और उसके ऊपर 5-8 ट्वीट जो थे ना, वो किसी ने दिखाए नहीं, ठीक है? समहाउ आई कांट फाइंड दैट थ्रेड, बट उस पर्टिकुलर ट्वीट सीरीज के ऊपर पूरा जो डिस्कशन चल रहा था, विच वॉज बेसिकली व्हाट हैज़ हैपेंड, एंड आई ओपनली स्पोक अबाउट विद रिगार्ड्स टू कश्मीर. चाहे वो कश्मीर का हिंदू था, चाहे वो कश्मीर का सिख था, चाहे वो कश्मीर का मुसलमान था, या चाहे वो वहाँ का क्रिश्चियन था. और कुछ क्रिश्चियंस भी वहाँ पे थे बेसिकली हु सफर्ड. देयर वर लॉट ऑफ हिंदूज हु सफर्ड, देयर आर लॉट ऑफ मुस्लिम्स हु सफर्ड देयर एज वेल. सो वो मेरा एक पॉलिटिकल स्टैंड था और बहुत टाइम पहले था. नाउ व्हाट हैपेंस इज बेसिकली, मैं आपको बेसिकली, चलो आप मुझे इंटरनेशनल बुलाते हो, मैं आपको बेसिकली 1-2 चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा जिनसे शायद आप भी समझ जाओगे कि विदाउट रिसर्च चीज़ें बोलना है, किसी को बेसिकली कुछ बोलना कितनी बेवकूफ़ी होती है. एंड लेट्स पिक अप दिस इज़ गाइज हिंदुस्तान टाइम्स, राइट? हमारे कंट्री का न्यूज़पेपर है. तो मैं आपको ऐसे 5-8 और वेबसाइट्स खोल के दूंगा. व्हाट इज रिटन हेयर, आई एम नॉट, ये जो सारे कमेंट्स, ये जो सारे ट्वीट्स है ना, ये मैंने खुद से नहीं बोले, ये मैंने पर्टिकुलरली मीडिया से उठा के ही बोले. लाइक फॉर एन इंस्टेंस, ऑन द February पर्सनल ऑफ 4 Rajputana rifles of Indian Army cordoned the 2 villages Kunan and Pushpora in North Kashmir Kupwara's district, and insurgency allegedly gang raped at least 23 women and some estimates placing it at 40. Where is it? Where is it? ये मैंने वेबसाइट नहीं बनाई है ना, this here, right? This is our particular website, number 1. Number 2, this is Round Table India, right? ये मैंने यहाँ से रिसर्च पढ़ के उठाई थी. ट्रूथ बिहाइंड आर्म फोर्सेस, और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मेरी वेबसाइट्स नहीं है, ये सारी रिसर्च, दीज पर्टिकुलर रिसर्च वेर मेंशन्ड देयर. What is the name of the website? Human Rights Organization. This is the report. This is the particular thing which was written over there. ये सारी चीज़ें जो है, मैं बेसिकली इन चीज़ों को लेके जवाब नहीं देने वाला था, बट देयर आर सम पीपल who really have basically like you know supported us throughout and thin, so it was very important for me to come down. चलो ये भी गलत है. This is basically Wikipedia, right? अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है, कुछ भी हिस्ट्री में गलत हुआ है, one should obviously like you know if I acknowledged it, that doesn't mean that I'm against my country. अगर फॉर एन इंस्टेंस कल को मैं कहीं पे किसी चीज़ के बारे में गलत होते हुए देख रहा हूँ एंड आई रेज माई वॉइस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट डजंट मेक मी इंटरनेशनल, राइट? हाउ इज दैट? और मैंने कहाँ पे बोला कि फॉर एन इंस्टेंस आई हैव लाइक यू नो सेड दैट ऑल आई वाज स्टेटिंग इन दोज पर्टिकुलर थिंग्स, दैट व्हाई आरंट दीज थिंग्स बीइंग डिस्कस्ड. और मैं समझता हूँ द काइंड ऑफ ए इंडस्ट्री दैट वी आर इन, बहुत सारी चीज़ें जो हो मिसकोट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसरेड हो सकती है. नाउ let me educate you about second thing, like you know about my family background.
I have 3 presidential awards. I have 7 gallantry awards in my home, in my family. Okay, which is for a fact. Second thing, 3 of my family members are serving in police and army. Third thing, I have studied in army school in one of the most prestigious army schools in India, which is called Army School BB Cant. Right? So अगर for an instance मैं एक DGP के page पे where there is guys like DGP, Anupam Kher, lot of other journalists and everyone is there, and I'm stating something from the websites and I'm stating something from the journalism that is there, and I'm questioning that you either answer those people or you answer the accusations. Does that make me an anti-national? ये कहाँ की बकवास है? और इसको देखो, डिवाइड मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ. मेरा एक पर्टिकुलरली जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो था जैसे था, वी लेट इट गो. It is nobody is talking about, and these things happen. But that doesn't make that you create a different turn for it and then make someone look like just because I'm from Kashmir and you're going to say all of this to me. Yeah, it is hurtful. It is freaking painful. Now, all I want you to do is like before you point questions at me, before you basically आप उठा के मेरे ऊपर उंगली उठाते हो, आप जाके उनसे सवाल पूछो ना यार. बेसिकली जिन्होंने हमारे मतलब these are our national, some of them are national newspapers. There are organizations who are talking about it. Why aren't you questioning them? आप मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो क्योंकि मैंने उनका जर्नलिज्म कोट किया या मैं उन चीज़ों के बारे में जवाब दे रहा हूँ. बट एनीवेज देखो, मैं इस चीज़ के मुझे किसी को ये प्रूव करने की नहीं, ये मुझे किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है दैट हाउ मच ऑफ nationalist I am, how much of like Indian I feel or whatever. By the way, I'll show you one more this thing. This is another basically page. ये भी एक थोड़ा सा research था. This is basically the logical Indian, which is also describing the same what has India's judiciary done for the mass rape victims, etc. Right? If you don't know the concept of half widows, right, in Kashmir, my cousin has got shot 32 times. We have suffered because of the militancy in Kashmir. My uncle have literally got attacked multiple times. Right? 32 गोलियां ठोकी थी मेरे कजन को, ठीक है, मिलिटेंसी में. तो तुम्हें लगता है कि मैं बहनचोद like I'm supporter of terrorism? Like, are you going to question like my dignity on that? Like, you have to be out of your mind. Like, obviously, how would you know? Because you don't know. So मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देने वाला था. Look, I am simply doing business, but I had an opinion. But चलो, मैं एक honestly like I'll just come out honestly and tell you certain things here for everyone to understand. If those particular tweets or me stating the journalism has hurt anyone's sentiments, has hurt any particular person's sentiments, I seek apology. I'm sorry. I didn't mean to. और मैंने आपको साफ साफ ये दिखा दिए कि that why basically I stated those things that were there and why actually I tried to shed light on that. And how did people take those particular contexts and put it out? I have been in the background, the kind of hard work, like even before this whole thing, I came into the esports scenario. I was into esports, now I came in a limelight because of certain issues, is not something that, I mainly wanted to do or something like that, but it just happened at that time. Now, uski wajah se, like, there have been a lot of people in India that who know me, like, they know what exactly I'm trying to do for the Indian gaming community, whether it's for Indian athletes over there, Indian fighters over there, some of the Indian organizations, people who are close to me, they know it. They know it very well. And you really think that people like, from like, they would still be basically talking to us if I was of that